अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शफकत अली। टुडे वी आर हियर विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका एशे के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर और आईआर के हवाले से या पॉलिटिकल साइंस के हवाले से बड़ा ही अहम टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है IMF अ ब्लेसिंग और अ कर्स फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, टीवी चैनल्स पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये बड़ा ही अहम टॉपिक है पाकिस्तान की इकनॉमी के हवाले से। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने कई मरतबा IMF का रुख किया जब उसको ज़रूरत पड़ी है लोन्स या बेल आउट पैकेजेस की। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि IMF के जो लोन्स हैं वो पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए ब्लेसिंग है या कर्स हैं। तो आज हम दोनों साइड्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी साइड लेनी है पेपर में। तो आपने दोनों ब्लेसिंग और कर्स दोनों साइड आपने देखनी है, सुननी है, आपने नोट डाउन करना है। ठीक है, उसके बाद नेचर ऑफ द क्वेश्चन देख के आपने उस हिसाब से अपना स्टांस लेना है। ठीक है, so the International Monetary Fund has been a key financial partner for Pakistan, providing bailouts and economic assistance during financial crisis। कि भाई हम देखते हैं कि जो IMF है वो एक पाकिस्तान का अहम पार्टनर रहा है। ठीक है, वो पार्टनर पाकिस्तान के लिए कैसे रहा है? बेलआउट पैकेजेस प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को जब पाकिस्तान को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इट्स स्ट्रिक्ट कंडीशंस, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस एंड डेब्ट बर्डन हैव स्पार्क्ड इंटेंस डिबेट अबाउट वेदर द IMF इज अ ब्लेसिंग और अ कर्स फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी। हम देखते हैं कि इसकी जो सख्त कंडीशंस होती हैं, इसकी सख्त शराइत होती हैं, या जो बड़े अरसे तक पाकिस्तान को माशी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। ठीक है, या एक ये डेब्ट बर्डन है पाकिस्तान पे। तो इस तरह की जो डिस्कशन है ये पाकिस्तान में बड़ी की जाती है। ये आपका सोशल मीडिया हो गया, ये जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, बड़ा ही अहम टॉपिक है। इस हवाले से बड़ी डिबेट चलती है पाकिस्तान में। ठीक है, तो उसमें ये डिस्कस किया जाता है कि भाई ये जो IMF है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ब्लेसिंग है या कर्स है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं IMF एज अ ब्लेसिंग एंड IMF एज अ कर्स। ठीक है, ये आप पर डिपेंड करता है और क्वेश्चन की नेचर पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्टांस लेना है, पॉजिटिव स्टांस लेना है या नेगेटिव स्टांस लेना है। ठीक है, तो हम दोनों साइड्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान डिपेंडेंस ऑन द IMF। सबसे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान की डिपेंडेंस IMF पर कैसे रही है। कि पाकिस्तान हैज़ टेकन ओवर 20 IMF प्रोग्राम्स सिंस इट्स फर्स्ट बेल आउट इन 1958। कि भाई पाकिस्तान ने 20 से ज़्यादा IMF प्रोग्राम्स लिए हैं। ठीक है, पहला जो पाकिस्तान ने बेल आउट पैकेज लिया था वो 1958 में लिया था। उसके बाद द लोन्स एम टू स्टेबलाइज पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फिस्कल डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। कि ये जो लोन्स होते हैं इनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको स्टेबलाइज करें, फिस्कल डेफिसिट है उसको कम करें, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है उसको ख़त्म करें। हाउएवर दीज प्रोग्राम्स कम विथ ऑस्टेरिटी मेजर्स, सब्सिडी कट्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। के ये जो प्रोग्राम्स होते हैं IMF के उनमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ नेगेटिव साइड भी है कि वहाँ पे ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, सब्सिडी कट की जाती है और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं वो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाउ द IMF इज़ अ ब्लेसिंग फॉर पाकिस्तान। कि भाई IMF पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग क्यों है? कि फाइनेंशियल लाइफ लाइन इन इकोनॉमिक क्राइसिस, IMF लोन्स प्रिवेंट बैंकरप्सी व्हेन पाकिस्तान फेसेस लो फॉरेन रिजर्व्स एंड हाई फिस्कल डेफिसिट्स। ये जो IMF के लोन्स होते हैं वो बैंक करप्ट होने से बचाते हैं पाकिस्तान को, और जो पाकिस्तान के पास लो फॉरेन रिजर्व्स हैं उस हवाले से पाकिस्तान को हेल्प आउट करते हैं, और जो हाई फिस्कल डेफिसिट होता है उसको कम करते हैं। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ बैंकरप्सी। Countries don't go bankrupt like companies. Instead, they face sovereign default, meaning they cannot repay their foreign loans or interest on time. This leads to loss of international credibility, currency collapse, inflation and recession, trade and investment freezes. So countries try very hard to avoid default.
Now, how do the loans help prevent default? When Pakistan takes loans, especially from IMF, the new money is used to pay off old loans like debt rollover. Pakistan often borrows new money to repay old debt. This prevents missed payments, default level, loss of market access. This is called refinancing or rolling over debt. How does it support foreign exchange reserves? Low reserves mean Pakistan cannot pay for import like oil, food, machinery, debt payments. Loans increase reserves so the state bank can stabilize the rupee, pay external obligations, maintain imports. उसके बाद it helps restore investor confidence in Pakistan's economy, avoiding total collapse. How does IMF loan restore international confidence? When the IMF approves a program, others follow, like World Bank, Asian Development Bank, countries में Saudi Arabia, UAE, China, because IMF acts like a guarantee that Pakistan will reform and repay. This stops capital flight and panic. ठीक है, तो इस तरह से जो IMF के लोन्स होते हैं वो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग है, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उनमें पाकिस्तान को हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के IMF डिमांड्स रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट्स, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन and reforming tax collection. What does it mean? It means the overall economy is stable and predictable, not in crisis. Prices are not rising too fast. Currency is not collapsing. Government finances are under control. Investors feel safe. Growth is steady. When a country like Pakistan goes to the IMF, it usually means things are unstable. High government borrowing, high inflation, falling foreign exchange reserves, pressure on the rupee, growing debt. So the IMF gives loans only if the country fixes the root problems. ठीक है, reducing fiscal deficit means gap between spending and income, कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज़्यादा होगी और गवर्नमेंट की इनकम कम होगी तो इसको फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है. सो द गवर्नमेंट बोरोज टू फिल द गैप. पाकिस्तान's deficit is usually very high. Huge interest payments on debt, subsidies, loss making SOEs, डिफेंस, पेंशन, सैलरीज, जिसकी वजह से इस तरह की पाकिस्तान की स्पेंडिंग है तो जो पाकिस्तान की इनकम है वो कम है. ठीक है, तो इस वजह से ये ह्यूज गैप आ जाता है जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं. तो अब हम ये देखते हैं कि IMF ये डेफिसिट रिड्यूस कैसे करती है कि बिकॉज लार्ज डेफिसिट्स क्रिएट सीरियस रिस्क्स. कैसे? गवर्नमेंट कीप्स बोरोइंग, लाइक गवर्नमेंट बोरोइंग करती रहती है तो इससे क्या होता है कि डेब्ट राइज होता है. उसके बाद गवर्नमेंट ज़्यादा मनी प्रिंट करती है जिससे इन्फ्लेशन राइज होती है. ठीक है, उसके बाद बैंक्स लेंड टू गवर्नमेंट, जो बैंक्स होती हैं वो गवर्नमेंट को उधार पे देती हैं जिसका क्राउड आउट प्राइवेट बिजनेस. ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फॉल्स. तो इसमें IMF क्या करता है कि IMF कहता है कट अननेसेसरी स्पेंडिंग, रिड्यूस सब्सिडीज, रिफॉर्म SOEs लाइक PIA, स्टील मिल्स, डिस्कोज ETC. ठीक है, उसके बाद इंक्रीज रेवेन्यू मेनली टैक्सेस. ये कहती है IMF के जो टैक्सेस हैं उनको आप रिफॉर्म करें, अपना जो रेवेन्यू है इनको इंक्रीज करें. कैसे? टैक्सेस लगाएं. द गोल इज टू लिव मोर विद इन अवर मीन्स. उसके बाद कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन. व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट मीन्स प्राइसेस आर राइजिंग एंड द रूपी बॉयज लेस. हाई इन्फ्लेशन हर्ट्स पुअर एंड मिडिल क्लास द मोस्ट. सेविंग्स, business planning, investment. Why does IMF focus on inflation? Because Pakistan often has inflation caused by printing money, rupee depreciation, fuel and energy price hikes, high deficits, weak monetary policy. So IMF pushes policies to slow price growth such as higher interest rates, stopping government borrowing from state bank, controlling money supply, reducing fiscal deficit, stabilizing the rupee.
This can be painful short term but prevents hyperinflation like Argentina and Zimbabwe. Reforming tax collection. Okay, what is the problem in Pakistan? Very few people pay direct taxes. Large informal economy, tax evasion, elite exemptions, heavy reliance on indirect taxes like sales tax, fuel tax. So the government keeps borrowing because revenue is too low. IMF wants Pakistan to broaden the tax base, reduce exemptions for powerful groups, bring retailers, real estate, agriculture into tax net, digitize FBR, rely more on direct taxes, reduce unfair indirect taxes on poor, more stable tax revenue, less borrowing, less crisis. ठीक है, but it stabilizes exchange rates, preventing currency devaluation and hyper inflation. How macroeconomy stability helps the currency? When a country has huge budget deficits, heavy borrowing, low reserves, weak tax collection, investors and markets lose confidence in the currency, so people start converting rupees into dollars, sending money abroad, demanding higher interest rates, raising prices, expecting devaluation. Like this causes currency depreciation, inflation, sometimes hyperinflation. So IMF policies try to stop this spiral, like already discussed, reduce fiscal deficits, controlling inflation. High inflation weakens a country because people rush to borrow dollars to protect savings, goods become expensive, interest rates rise, investors panic. So IMF asks central banks to raise interest rates, stop monetary financing, stabilize government spending. This slows down price increases, preventing a collapse in purchasing power. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी वो मैटर क्यों करती है कि स्टेबल कंट्री प्रोटेक्ट्स स्टेबल करेंसी, प्रोटेक्ट्स सेविंग्स, कीप्स इंपोर्ट्स अफोर्डेबल, reduces inflation, improves business planning, attracts investment. ठीक है, whereas rapid devaluation can lead to capital flight, panic buying of dollars, price shocks, poverty and unemployment, social unrest. That is why IMF policies focus on stability first, growth later. So by reducing fiscal deficits, controlling inflation and reforming tax collection, IMF supported policies help stabilize the exchange rate. This prevents excessive currency devaluation and reduces the risk of hyperinflation. ठीक है, उसके बाद attracts foreign investment. A country under an IMF program is seen as more stable, attracting foreign direct investment. So how an IMF program attracts foreign investment? When a country joins an IMF program, it sends a signal to the world that the government is serious about fixing the economy. International lenders are supervising reforms. Default risk is being reduced. This builds confidence, and confidence attracts foreign direct investment. Why investors care about IMF programs? Foreign investors want safety and predictability. They don't like unstable countries where the currency keeps crashing, inflation is out of control, rules exchange suddenly, there is risk of default. So when the IMF steps in, it stabilizes the economy through policies like reducing deficits, strengthening tax collection, controlling inflation, exchange rate reforms. This makes the future more predictable. It signals discipline and credibility. Investors think if IMF is supporting this country, it is less likely to collapse, because IMF monitors reforms and ensures repayment discipline that reduces risk perception. ठीक है, उसके बाद it unlocks additional financing after IMF approval. Others also start lending like World Bank, Asian Development Bank, friendly countries, private investors. So the economy gets more dollars flowing in. ठीक है, उसके बाद it encourages structural reforms,
It forces tax collection reforms, preventing reliance on loans and external borrowing. So, how the IMF encourages structural reforms? When a country keeps borrowing again and again, like Pakistan, the underlying problems are usually weak tax collection, huge budget deficit, लॉस मेकिंग स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस लाइक आपका जैसे पीआई हो गया, एनर्जी सेक्टर इनएफिशिएंसीज, करप्शन एंड लीकेजेस, नैरो एक्सपोर्ट बेस. सो द IMF सेज we will give you loans but only if you fix the roots of the problem. These long term fixes are called structural reforms. टैक्स कलेक्शन रिफॉर्म्स कैसे हो गए कि पाकिस्तान कलेक्ट्स वेरी लिटिल टैक्स कंपेयर टू द साइज ऑफ इट्स इकोनॉमी. सो द IMF pushes for broadening tax base, reducing exemptions for elites, bringing powerful sectors into taxation like retail, real estate, agriculture, depending on policy choices. उसके बाद डिजिटलाइजिंग FBR and reducing corruption, shifting toward direct taxes instead of indirect ones. Why? Because if a country earns more through taxes, it doesn't need to borrow so much. So less dependence on loans, lower debt burden, more sustainable finances. Reducing reliance on external borrowing. How? Right now many developing countries survive by borrowing from IMF, borrowing from friendly countries, issuing bonds, rolling over debt. That is risky. So IMF reforms aim to make the economy self-reliant by improving revenue, controlling spending, cutting wasteful subsidies, reforming loss-making state institutions, strengthening exports and investment. This way the country doesn't need repeated bailouts. उसके बाद it reduces government inefficiencies in power, gas and public sector enterprises. So what are government inefficiencies? In many developing countries including Pakistan, some government run sectors lose a lot of money every year because of corruption, wasteful spending, political interference, poor management, overstaffing, low productivity, theft and line losses in power and gas, people not paying bills. These losses do not disappear, they are covered by government borrowing, which increases debt and deficits. So the IMF tells governments, fix these sectors, do not keep losing money and borrowing more. Our sector inefficiencies क्या है? Common problems include electricity theft, line losses, unpaid bills, politically set low tariffs, circular debt build-up, overbilling and mismanagement. These create circular debt where power companies owe fuel companies and the government keeps bailing them out. What IMF pushes for? Reducing line losses, controlling theft, charging cost-based electricity prices, improving billing and recovery systems, making regulators independent, privatizing or reforming discos where possible. गोल क्या है? टू स्टॉप पावर कंपनीज फ्रॉम लूजिंग मनी एवरी ईयर सो द गवर्नमेंट डजंट हैव टू बारो टू रेस्क्यू देम. गैस सेक्टर इनएफिशिएंसीज क्या है कि प्रॉब्लम्स आर सिमिलर लाइक इलीगल गैस कनेक्शन, लीकेज लॉसेस, लो टैरिफ्स, सब्सिडीज benefiting the rich, unpaid dues. IMF reforms include realistic pricing, plugging leakages, improving metering, ending blanket subsidies, better audits and governance. This reduces gas circular debt, another big burden on the budget. Public sector enterprise क्या है उसको हम डिस्कस करते हैं कि these include airlines, railways, steel mills, utilities, government companies. Many of these lose billions every year, but instead of shutting or fixing them, governments borrow money to keep them alive. IMF pushes for restructuring, privatization or partial privatization where suitable, professional management, transparency, elimination of political appointments, performance monitoring. इसका गोल क्या है? To turn them profitable or at least stop the annual losses. Why does the IMF care about these inefficiencies? Because when these sectors lose money, the government borrows more, debt rises, deficits widen,
inflation increases, the economy becomes unstable. Fixing inefficiencies means less borrowing, stronger finances, lower tax burden on citizens, more funds for education and health. So IMF programs push governments to reform loss-making sectors like power, gas, and state-owned enterprises, so they stop wasting money. This reduces financial losses, lowers government borrowing, and strengthens the overall economy. उसके बाद it prevents economic collapse and bankruptcy. I think we have discussed in previous slide. Without IMF bailouts, Pakistan would default on its foreign loans and imports. The IMF restores investor confidence, preventing total economic collapse. It helps maintain foreign exchange reserves, allowing Pakistan to continue importing essential goods like oil, food, and machinery. We have discussed in previous slide. उसके बाद controls inflation and stabilizes prices. IMF enforced fiscal discipline helps reduce budget deficits, which can stabilize inflation, removing unnecessary subsidies, ensuring that money is spent efficiently, avoiding excess government borrowing. Long-term economic discipline leads to stable exchange rates and price control. अब हम डिस्कस करते हैं. आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड फिस्कल डिसिप्लिन, बजट डेफिसिट. ये हमने वेरी डिटेल्ड डिस्कस की है प्रीवियस स्लाइड्स में. आई डोंट नो कि ये दोबारा स्लाइड में कैसे आ गया, लेकिन हम ये डिस्कस करते हैं कि अननेसेसरी सब्सिडीज़ हैं वो कैसे रिमूव करती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि सब्सिडी है क्या. A subsidy is when the government pays part of the cost of something so people get it cheaper than the real price. एग्जाम्पल अब अगर हम देखें, चीपर इलेक्ट्रिसिटी, उस पर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है. उसके बाद चीपर गैस, चीपर फ्यूल. सब्सिडीज टू लॉस मेकिंग गवर्नमेंट कंपनीज, स्पेशल टैक्स ब्रेक्स फॉर पावरफुल ग्रुप्स. सब्सिडीज आर नॉट ऑलवेज बेड, दे कैन हेल्प द पुअर, फार्मर्स, strategic sectors, but in many countries including Pakistan, a lot of subsidies go to people who do not need them or inefficient sectors. So what is the problem with unnecessary subsidies? When the government spends too much on subsidies, it must borrow more money, print more currency, increase taxes elsewhere. This causes high fiscal deficit, rising public debt, inflation, pressure on the currency. So IMF says keep only targeted subsidies for the poor, remove wasteful and unfair subsidies. How IMF tries to fix this? Remove blanket subsidies, for example cheap electricity for everyone including the rich, cheap fuel for all, losses covered for inefficient SOEs, स्टेट ओरिएंटेड जो एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है. उसके बाद टैक्स एग्जेम्पशंस फॉर एलिट्स एंड पॉलिटिकली कनेक्टेड ग्रुप्स, दीज बेनिफिट द वेल्दी मोर देन द पुअर. सो IMF रिकमेंड्स मार्केट बेस्ड प्राइसेस, targeted cash support for the poorest, transparency about who receives benefits. टारगेट सब्सिडीज टू द पुअर वो कौन सी हैं? Instead of cheap prices for everyone, IMF supports programs like cash transfers, subsidies only for low-income households. So help still reaches the poor, but government spending becomes smaller and better focused. How does it reduce government borrowing? When wasteful subsidies shrink, the deficit falls, the government borrows less, debt stabilizes, inflation reduces. Because less borrowing, less pressure on the budget and currency. Why this matters? When subsidies are better targeted, money is used efficiently, taxpayers' money is not wasted, government debt grows more slowly, the economy becomes more sustainable. And that is exactly what the IMF wants: discipline and spending. So the IMF encourages governments to remove unnecessary subsidies so that public money is spent more efficiently. This reduces budget deficits and prevents excessive government borrowing. उसके बाद it strengthens Pakistan's financial institutions.
IMF forces taxation and revenue reforms, increasing Pakistan's ability to finance itself. उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस ensures better monetary policy decisions. It encourages the government to digitalize tax collection, reduce corruption and improve financial transparency. अच्छा, पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट कम टैक्स कलेक्ट करती है और ज़्यादा खर्च करती है, ठीक है। फिर गैप को फिल करने के लिए फिर बारो करना पड़ता है। तो IMF कहता है कि अगर खुद रेवेन्यू जनरेट नहीं करोगे तो हमेशा कर्ज लेना पड़ेगा, ठीक है। सो IMF पुशेस पाकिस्तान के टैक्स बेस ब्रॉडन करे, पावरफुल सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाए, अननेसेसरी टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म करे, डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए, FBR को इम्प्रूव करे। उसका रिजल्ट क्या आएगा कि पाकिस्तान अपने खर्च खुद फाइनेंस कर सकता है, उस एक्सटर्नल बारोइंग कम होती है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होता है, ठीक है, यानी सेल्फ रिलायंस बढ़ती है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस कैसे हो कि IMF के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंट हो। क्यों? बिकॉज जब गवर्नमेंट डायरेक्टली SBP से पैसे मंगवाती है तो SBP ज्यादा पैसे प्रिंट करता है, इकोनॉमी में रुपीज बढ़ जाते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, रुपये गिरता है। सो IMF सपोर्ट्स SBP इंडिपेंडेंस, मीनिंग गवर्नमेंट कैन नॉट फोर्स SBP टू प्रिंट मनी। मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस इकोनॉमिक बेसिस पर होते हैं, पॉलिटिकल नहीं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में फोकस होता है, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी बेटर होती है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि बेटर इन्फ्लेशन कंट्रोल, स्टेबल रुपी, मार्केट कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। उसके बाद डिजिटाइजिंग टैक्स कलेक्शन, वो कैसे कि IMF एनकरेज करता है कि टैक्स सिस्टम डिजिटल हो, बिकॉज मैनुअल सिस्टम में ब्राइबरी होती है, फेक रिकॉर्ड्स होती हैं, अंडर रिपोर्टिंग होती है, ब्लैक इकोनॉमी बढ़ती है। डिजिटल सिस्टम मीन के ऑनलाइन फाइलिंग हो, ट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस हो, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स हो, लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। इसका रिजल्ट क्या होगा कि करप्शन कम होती है, टैक्स कंप्लायंस बढ़ता है, गवर्नमेंट रेवेन्यू स्टेबल होती है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव कैसे होगी? वो उसमें ये होगा कि डिजिटाइजेशन या रिफॉर्म्स मीन पैसों का क्लियर रिकॉर्ड होता है, मिसयूज आइडेंटिफाई होता है, लीकेजेस बंद होती है, अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। इससे इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है, ठीक है। अगर हम सिंपल कह लें कि IMF रिफॉर्म्स हेल्प पाकिस्तान कलेक्ट मोर टैक्सेस फेयरली, रिड्यूस करप्शन थ्रू डिजिटल सिस्टम्स एंड इंश्योर द स्टेट बैंक makes independent decisions to control inflation and stabilize the economy, ठीक है। उसके बाद IMF unlocks more international aid and investment. Countries in an IMF program become eligible for loans from World Bank, Asian Development Bank and other institutions. Foreign investors feel more confident investing in Pakistan because of IMF backed reforms. Pakistan can negotiate better trade agreements with China, Saudi Arabia, UAE and other allies. ये unlock more international aid and investment कैसे कि when a country like Pakistan enters an IMF program, it becomes more trusted in the eyes of world. This trust is very important. IMF basically gives a signal to global lenders and investors that this country is following economic reforms and is less likely to default. Because of this, more money and investment becomes available. Access to loan from World Bank and ADB, countries under an IMF program become eligible for more financial support from World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, other multilateral lenders. These institutions think if IMF is supervising reforms, our loans are safer. So they improve development loans, budget support loans, project financing. This brings dollar into Pakistan's economy, increasing foreign exchange reserves. अब फ्रेंडली कंट्रीज कैसे सपोर्ट करती हैं कि IMF प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज लाइक सऊदी, UAE, चाइना often provide deposits, rollovers, oil financing, investments. Because IMF approval means Pakistan is following a disciplined economic roadmap.
रीपेमेंट रिस्क कम हो जाता है, सो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स फील सेफ। वो कैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स कंपनीज एंड फंड्स यूजुअली अवॉइड अनस्टेबल इकोनॉमीज, बट IMF रिफॉर्म्स सिग्नल स्टेबिलिटी, currency stabilization, inflation control, improved tax governance, transparency, so they feel more confident to invest in sectors like manufacturing, energy, telecom, banking, real estate and infrastructure. Foreign direct investment brings jobs, technology, export, economic growth. Stronger negotiating position in trade deals, वो कैसे? A stable IMF backed economy helps Pakistan to negotiate better trade and investment agreements, attract joint ventures, open new market access. For example, with partners like China, Saudi, UAE, when these countries see reforms हो रहे हैं, economy stabilize हो रही है, transparency improve हो रही है, they are more willing to sign long-term agreements and invest because they believe Pakistan अब serious है economic reforms पर. If we simplify it, के IMF programs boost international confidence. This helps Pakistan quality for World Bank and ADB loans, attract foreign investment and negotiate stronger economic and trade partnerships with countries like China and Saudi Arabia. ठीक है, उसके बाद इट इम्प्रूव्स पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एंड बोरोइंग कैपेसिटी. IMF loans improve Pakistan's credit rating, making it easier to get low interest international loans. Better credit ratings mean Pakistan can borrow from global markets at cheaper rates, reducing debt burden. It helps avoid borrowing at high interest rates from private lenders, which worsen economic crisis. So पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग कैसे बढ़ती है, कैसे इंप्रूव होती है, और बोरोइंग कैपेसिटी वो कैसे इंप्रूव होती है. अब हम देखते हैं कि क्रेडिट रेटिंग है क्या. अ क्रेडिट रेटिंग इज लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर अ कंट्रीज फाइनेंशियल हेल्थ. इट इज गिवन बाय एजेंसीज लाइक मूडीज, S&P या आर फिच. They judge how risky is to lend money to Pakistan. Can Pakistan repay its debts? If they think Pakistan is risky, the rating is low. If they think Pakistan is stable, the rating is higher. Why do credit ratings matter? Because ratings decide the interest rate Pakistan must pay when borrowing from global markets. Low rating, high interest rates, because lenders think risk ज़्यादा है. Better rating, lower interest rates, because lenders trust repayment. So a good rating reduces debt burden. How IMF improves Pakistan's credit rating? When Pakistan joins an IMF program, it reduces fiscal deficit, controls inflation, improves tax collection, reforms power and gas sectors, strengthens state bank independence. Credit rating agencies see this and say Pakistan is now following a responsible economic plan supervised by the IMF. Risk has reduced. So credit rating improves, default risk declines, investors feel safer lending. उसके बाद cheaper borrowing for Pakistan with a better credit rating. Pakistan can borrow at lower interest rates. Loans become more affordable. Debt servicing cost decreases. This means less pressure on the budget, fewer crises, more money left for development like health, education and infrastructure. It helps avoid loan sharks and costly emergency loans. When ratings are bad, Pakistan is often forced to borrow at very high interest rates from private lenders on tough terms. This increases debt and risk, but IMF-backed stability means Pakistan can borrow on normal terms from multilateral institutions through international bonds at lower cost, so the debt burden is lighter. अगर हम सिंपली बयान करें कि IMF सपोर्ट improves Pakistan's credit rating so it can borrow from international markets at lower interest rates, reducing the debt burden and preventing financial crisis. उसके बाद it encourages industrial growth and export competitiveness. IMF pushes Pakistan to reform its economy, making it more export driven, encourages privatization and efficiency, making industries more competitive globally. It helps Pakistan reduce reliance on
imports, strengthening local businesses. इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में कैसे कि IMF प्रोग्राम्स डू नॉट जस्ट फोकस ऑन फाइनेंस, दे आल्सो इनकरेज स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू मेक द इकोनॉमी स्ट्रॉन्गर एंड मोर सेल्फ सफिशिएंट. Push for industrial reforms. Many industries in Pakistan face inefficiency, high costs, outdated machinery, poor management, dependence on government subsidies. IMF encourages privatization or better management of state-owned industries, cost cutting and efficiency improvements, modernizing production techniques, reducing over reliance on subsidies. रिजल्ट क्या होता है कि इंडस्ट्रीज बिकम मोर कॉम्पिटिटिव, प्रोड्यूस हायर क्वालिटी गुड्स एंड कैन कॉम्पीट ग्लोबली. उसके बाद encouraging export driven economy, IMF reforms push Pakistan to focus on sectors with export potential like textile, information technology, agriculture, manufacturing, reduce trade barriers that hurt competitiveness, adopt policies that increase foreign exchange earnings. इसका रिजल्ट क्या निकलता है? पाकिस्तान earn more dollars from exports, reducing dependence on external borrowing. उसके बाद reducing reliance on imports, वो कैसे कि when local industries are competitive, domestic goods replace imported goods, import bills decrease, foreign reserves improve, rupee stabilizes. एग्जाम्पल अगर दिए हम कि more textile exports, more dollars. अगर हम मोर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होगी तो ज़्यादा डॉलर आएंगे. मॉडर्नाइज्ड स्टील इंडस्ट्री, फ्यूअर इंपोर्ट्स फॉर ऑफ रॉ मटेरियल्स, लोकल टेक प्रोडक्ट्स, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्टेड गैजेट्स. अगर मॉडर्नाइज्ड स्टील इंडस्ट्री होगी तो जो रॉ मटेरियल है उसकी इंपोर्ट थोड़ी होगी. अगर लोकल टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन होगी तो जो रिलायंस है इंपोर्टेड गैजेट्स पे वो कम हो जाएगा. उसके बाद हाउ डज इट स्ट्रेंथन लोकल बिजनेसेस, वो कैसे कि IMF रिफॉर्म्स encourages efficiency, transparency, proper management, accountability. This strengthens private sector industries so they create jobs, improve productivity, contribute more to GDP, generate taxes for the government. In simple words, IMF reforms encourage Pakistan to modernize industries, boost exports and strengthen local businesses, reducing import dependence and making the economy more competitive globally. उसके बाद boosts long term economic discipline कि IMF enforces strict financial discipline, making Pakistan more responsible in its economic policies. The IMF's mechanism, how it attempts to build discipline. Okay, the IMF does not directly govern Pakistan. Instead, it uses a combination of financial leverage, conditionalities, and technical persuasion to create external pressure for reforms. Enforcing strict financial discipline and policy responsibility. This is the IMF's traditional core strength. It acts as an external anchor to force politically difficult but economically necessary corrections. For example, the primary fiscal deficit shall not exceed 0.4% of GDP. Net international reserves must increase by 1.5 billion. The government will not borrow more than 10 billion rupees from the central bank. What would be the impact? This forces the Ministry of Finance and State Bank to plan with these ceilings in mind, curbing reckless spending and monetary financing. It shifts policy from short-term populism to measurable medium-term targets. उसके बाद how it encourages structural reforms in energy, taxation and governance. के IMF shifts from accountant to institutional engineer. It uses structural benchmarks, specific policy actions to be taken by certain dates. उसमें हम देखते हैं कि जो एनर्जी का सेक्टर है उसमें ऑटोमेटिक क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट, पावर सेक्टर एंटी थेफ्ट कैंपेन्स, सर्कुलर डेब्ट मैनेजमेंट प्लान, प्राइवेटाइज और रीस्ट्रक्चर डिस्कोज. उसके बाद टैक्सेशन में क्या है कि ब्रॉडन द बेस, फॉर एग्जांपल टैक्स रियल एस्टेट्स, रिटेल, एग्रीकल्चर, डिजिटलाइज FBR लाइक ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग, POS इंटीग्रेशन, remove distorting exemptions, increase tax to GDP ratio targets. उसके बाद गवर्नमेंट एंड SOEs publish annual audits of major SOEs,
implement a centralized SOE government policy, conduct spending reviews of loss-making entities, strengthen anti-corruption frameworks. ठीक है. उसके बाद हाउ डज इट हेल्प एलिमिनेट करप्शन इन पब्लिक सेक्टर enterprises? The IMF has a more indirect but increasingly focused role here. It cannot investigate individual corruption cases, but it designs systems to minimize opportunities for graft. Transparency as a weapon demands to publish SOE financial statements, contracts, and audit reports. And audit reports bring losses and sweetheart deals into public view. This empowers media, parliament like the PAC, and civil society to ask tough questions. Reducing arbitrary discretion, reforms like competitive bidding for contracts, digital procurement platforms, and automatic tariff adjustment remove the points where officials can exercise corrupt discretion. उसके बाद commercialization by pushing for performance contracts for SOE managers, independent boards, and privatization. The IMF aims to install professional managers whose goal is profitability, not political patronage or rent seeking. Conditionality on anti-corruption institutions. Recent programs have included benchmarks to strengthen the autonomy and capacity of institutions like the National Accountability Bureau or to amend their laws for more effective prosecution.